शनिबार छुट्टीको दिन म र मेरो सँगै काम गर्ने कोरियनसँग चाहिँ खाङवोन्दोमा रहेको फाङथे सान भन्ने पहाड चाहिँ चढ्न हिँडेका थियौँ। बिहानको खाना चाहिँ बाटोमा खायौँ, एकदम मिठो थियो। अनि खाएर चाहिँ फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यो। गन्तव्य चाहिँ 2.5 घन्टाको ड्राइभ पछि चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ पुग्यौँ। यात्रा सुरु। अब यहाँदेखि चाहिँ यात्रा सुरु। मौसम चाहिँ कुल छ, चिसो। विन्ड चिटर केही पनि ल्याएन, उतातिर गर्मी भएर त्यत्तिकै टी सर्टमा आयो। यहाँ चाहिँ चिसो चिसो छ, हरियाली एकदम अँध्यारो अँध्यारो। तलतिर खोलाको आवाज छारा छाङ 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 के भन्छन् अब त्यसरी झरिरहेछ। होटेर म 육사 कुहिरो लाहा सिनदेखि लानु कुहिरो लागेछ। तर ठिकै छ, नेपालकै याद आयो। पहाड चढ्दाखेरि तुवालो लाग्ने, कुहिरो लाग्ने थियो, त्यही ला सोसिमास्यो मस्तको। अब ठाउँतिर आउनु लाग्यो। 2 घन्टा जति चढेको उकालो। अब धेरै छैन, पर धेरै छ यहाँ। 예. 딱 2시간 걸리네요. 딱 2시간이야. 예. 와, 아유. यस्तै तेर्से छ कि कस्तो खालको नि।
डाँडा काँडातिर जताततै देखिन्थ्यो के अरे। अब के गर्नु, अब पुरै कुहिरोलाई ढाकेछ। कुहिरो छ, कुहिरोले केही देखियो होइन। कुहिरो नलागो भए चाहिँ सिनहरू तपाईँहरूलाई देखाउँथे। सिन छैन, बिना सिनको हेर्नु। सबै फुलै फुल। 너도 이제 그런 걸 갖고 있어야 돼. 나중에 그 어떻게 하면 이런 있으나 이래는 하고 있고 이래는 한 관리한다. 그걸 딱 쓰면은 나중에 좀 지금 네 맞아요. 맛있어요. 그게 그래. 이거 깜찍하네. 먹을만해. 왜? 김치 먹어봐, 김치. 맛있어. 저라고 좀 분홍색 꼽힌 거 있죠, 그거. 삼철쭉이라는 거. 이게 저기 3월 말에서 4월 초에 피는 건데, 5월 말에 폈어. 얼마나 추운 거야, 이거. 야, 얘 좋아서. 국물 떠서 밥 말아. 네. 그게 제일 맛있는 거예요. 했어? 차비랑. 예. 여기가 됐나 봐요, 이게.